Yes, please. Thank you, Rashmi ma'am. Good evening, everyone. I'm Jyotsna Gavri, and I'll be taking a session on the tool Canva to create flashcards and vocabulary cards. So, before we begin the session, I would like to share something about creativity. Creativity is contagious. Pass it on. So, let's explore new inspiration sources together. We as teachers can model creative ways of thinking, playfully engage with content, express ideas. Creatively fulfilled teachers are also happier teachers. Creativity also directly enhances learning by increasing motivation, deepening understanding, and promoting joy. Also, when it comes to teaching creatively, we use both the heart and the mind in equal measure. So, let's get up. And on this note, let's have a quick icebreaker through Mentimeter. And my question here is, what according to you is creativity? Please use www.menti.com and my code is 530689. I repeat, my code is 530689 and the question for the day is, what according to you is creativity? So please start answering. I repeat, my code is 530689. No answers as of now. Dear teachers, please participate. What according to you is creativity? It is such a beautiful word, creativity. We need to create. Yes, original work. Very nice. Innovation, originality. Very nice. Imagination. What a beautiful word, imagination. Inner thoughts. Wow. Anyone else? Inventiveness. Wow. Yes, we can invent new things. So I have got many, many beautiful words: originality, original work, innovation, inner thoughts, inventiveness, and imagination for creativity. Thank you everyone for participating in this ice-breaking activity. So creative teaching leads to active learning. And today, in this session, we will be enhancing our creativity by using this wonderful tool, Canva. Canva is the new canvas for teachers. We can create beautiful designs by selecting templates according to our choice and express the content in a way we like. It gives you all the tools we need to design anything. And I would like to mention here, I have made this PPT on Canva, on Canva. The PPT on Canva has been prepared on Canva only. So let's begin. How to create how to create vocabulary cards, flashcards using Canva. Now, what is Canva? Canva is a graphic design platform that allows users to create social media graphics, presentations, posters, and other visual content. It is available on web and mobile and integrates millions of images, fonts, templates, and illustrations. Now, what are the benefits of using Canva?
Canva is a tool loaded with enough easy to use features and functionality that anyone can create a variety of engaging content that gets shared. It automatically saves all your designs, and this is beneficial also because we can access our design and pass designs anywhere we go. Whether we use a free or paid photo or even one we upload ourselves, Canva provides easy to use photo editor where we can change the look of the image using settings that includes filters, tint, brightness and more. So here we have the steps how to use Canva. I have written the steps in a very detailed manner. The first step is to create an account. Visit www.canva.com and these are the details we have to fill in and then click sign up. Next, now to install Canva on your device, first is the mobile, which it is a handy device for all of us. In the Google Play Store, we have to search Canva and we can install the app in our phone. And on your PC, on the browser, we should search for Canva on PC as shown in the image below and we can click on the first result. Then we can see Canva for Windows and below we start downloading. Click on start download and the app will start downloading in your PC. And here is also a shortcut for using Canva. If you don't want to download it, we can also use Canva on our browser by simply searching www.canva.com and logging in your account which you have created. So these are some of the features in Canva. As you can see on the left side of the screen, we have templates, photos, elements, text, videos, background, uploads, folders, and more. That I'll be sharing you when we'll be doing the hands-on. So these are some of the features in Canva. We can stock images and illustrations. There is a library of fonts. There are beautiful fonts there. We can use any font, whichever you feel like. Then third one is the drag and drop editor. Sabse aasan, uthaya lagaya. Fourth one is the custom templates. We have plenty number of templates in Canva. We can do photo editing also, as Rashmi ma'am has created wonderful posters for all of us for all these sessions. She just asked for a pic and she has created beautiful posters using this photo editing on Canva only. Resize designs, voiceover, voice bubbles. We can also give our voiceover in Canva. Next is design grids, textures, and last but not the least are the stickers and GIFs, the moving figures. Now, what all can be created in Canva? We all know learning never stops. So we all can create all these things on Canva. PowerPoint presentations, the way I have created this PPT on Canva only. Flashcards, which we will be learning about today, videos, brochures, posters, yes, even lesson plans. The most important thing in a teacher's life, we have to make lesson plans. There are beautiful templates given for lesson plans in Canva. Timetable also we can make. There are inbuilt worksheets also in Canva. We just have to write the topic on which we need the worksheets and the worksheets are there. We can customize the worksheets according to our needs. Next is infographics and last is newsletter. There are many more. The list is endless, but I have given just a few things what we can create in Canva, which would be helpful for us as teachers. Now, the question is how to make flashcards. Now, this is the theme. This is the session to create flashcards. The first step is we have to choose from thousands of flexible templates or we can start our design from scratch. यहीं पे आती है creativity. अभी आप लोगों ने मुझे creativity के इतने अच्छे words बताए, invention, originality. तो जहाँ पर we can start our design from scratch. We need to add the information to the template. We can upload any image we need from the millions of images in the library. अगर आपको यहाँ से library से you don't feel like using the images, you can always search from Google and you can paste it on the slide. Change the colors, fonts and images until you are happy with your final design. Yes, जैसे हम PPT में we are never satisfied, हम colors, fonts और images उसके change करते रहते हैं, तो हम आराम से इसमें भी change कर सकते हैं. And last but not the least, we can download it in any format, JPEG, PNG or PDF, and if we need to print it, we can do that also. So
The new canvas for teachers, Canva. I have created these posters on Canva. This is the angle sum property. Sum of three angles of a triangle is always 180 degree, as you can see in the poster. Next is prime numbers. This is a vocabulary card. The vocabulary for prime numbers have been shared here, and you can see the backdrop. I have taken the template using numbers only. Next, these are flashcards for right angle. An angle whose measure is 90 degrees is called a right angle. Sphere, the characteristics of sphere. Now these are proper fractions and mixed fractions. We have created these beautiful cards using Canva only. Now this is Frere model. Yes, the most important tool which can be used for enhancing our teaching learning process. So I have made this Frere model on Canva only. This is on even numbers. As you can see, I've written the definition, characteristics, examples, and non-examples. So you can't use up creativity. The more you use, the more you have. Thank you. And let's have a hands-on on Canva now. Okay, so I have installed Canva on my PC, and first step is I will create my own design. We have millions of options here: custom dimensions, presentation, Facebook post, poster. So let's make a Frere model only. For Frere model, we need to go down, and we can find some flyers here. So we have to choose the flyer landscape, and we'll select that. So now we have a clear cut white paper जिसको हम अपने रंगों में अब रंगने वाले हैं. So who will tell me Frere model किस पे create करना चाहते हैं? Or do you want to create a vocabulary card? Anyone? Prime number, let us pick prime number. Prime numbers, ma'am, I've already created. Prime numbers का बना ले. ठीक है मैम, चलो let's begin. Composite का बना लो. I need your help for that, ma'am. Ma'am, I need your help for that. Prime numbers के लिए. Who said this? Okay, ma'am. Sujata here. Okay, Sujata ma'am, I need your help for creating this Frere model on prime numbers. So first step is मेरे पास ये clear cut मेरा canvas है. अब मैं इनको अपने रंगों में रंगने वाली हूँ. मेरे रंग में रंगने वाली ये मेरा पहला Frere model होगा. So let's begin. Now as we know Frere model में we have to divide the paper in 4 parts. So हम क्या choose करेंगे इसमें से? We'll go to elements. First of all, we'll search for icons. We need a line. So we take this. Now this line is gray in color, so we need to change the color. As you can see, I press there on this color option. So we'll get more options for colors, default colors. We can use any color which we feel like. Let's take black and we can enhance it. इसको मैंने increase कर दिया. अब मुझे चाहिए ऊपर की line. So we need to again take this line और मैं इसको rotate कर दूंगी. Yes. Now I'll extend it. ये आ गया मेरे 4 columns. Next step is I need to give some template to this. So let's add some colors. I'll go to background and add some good color. Take any theme. Okay, I'll take, say I want to take this one. Okay, ma'am, is this fine? Yes. Okay, now ma'am, tell me, we are supposed to prepare this Frere models on prime numbers, right? So in the first column, हम सबसे पहले elements को use करके जो भी हमें shape लेनी है, let's take a circle. We'll paste that circle in center of this, and we'll write prime numbers on this. अब लिखने के लिए हम क्या करेंगे? As you can see, यहाँ पे T लिखा है text. यहाँ पे 4 different sizes आपको मिल जाते हैं. So let's add a heading. Prime numbers. We can increase or decrease the size. ओके मैम, फर्स्ट वाले जो लेफ्ट बॉक्स है उसमें क्या आएगा मैम? इसमें प्राइम नंबर्स के हम क्या लिखेंगे?
Definition. Definition. So please, ma'am, prime numbers की definition. A prime number which has only two factors, one and number itself. Okay. Those numbers Okay, ma'am. A number which has only exactly two only factors. hmm, One and the number itself. number. Very nice. मैम वी कैन कस्टमाइज। अभी ये बाहर जा रहा है स्क्रीन से, तो हम इसको, ये जो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बार देख रहे हैं आप, इसके हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं टू फिट दिस। कोई भी आप n नंबर ऑफ यहाँ पे इमेज आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लीज हेल्प मी। Characteristics या features. सेकंड वाले हम characteristics लिखते हैं मैम। मैम बताइए मुझे, हम 2 लिखें 3 लिखें? 2 लिख लेते हैं। 2 लिख लेते हैं। Thank you so much for helping me out. Okay, so the first characteristic is, We can write one is neither prime nor composite. okay, and second one ma'am, Smallest prime number is 2. only even लिख देते हैं, smallest even prime number is 2। ठीक है, हाँ जी। 2 is the smallest even prime number। ओके मैम, थर्ड कॉलम में बताइए मैम मुझे। Examples. आप मुझे बताएंगे। Examples 5, 7, 11. ओके, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। मैम एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे हम डिपेंड करेंगे, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उसको इतना हमें अच्छा लगेगा। ठीक है मैम, 4 एग्जांपल्स बहुत है, 5, 7, 11, 13। ओके, Yes, ma'am. लास्ट वाले में क्या आएगा? Known examples. Examples, very nice। मैम आई होप द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, आपको दिख रहा है आइकन? Yes, ma'am. ओके मैम। मैम नॉन एग्जांपल्स बताइए मुझे। 4, 6, 9. ओके, 9। 6, 9, 15. बताओ मैम, डेट ऑफ बर्थ बताओ, प्राइम है कि कंपोजिट है? हाँ जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, प्राइम है या कंपोजिट है? 7 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो ऑब्वियसली प्राइम है। चलो मैं अपना लिख देती हूँ मैम, 24। ओके। तो दिस इज अ फेयर मॉडल। मैं इसमें चाहूँ तो और टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। इफ यू वांट टू ऐड एनी इमोजी, कुछ आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है टू मेक इट क्रिएटिव, कोई स्माइली, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो हम कुछ इसमें ऐड करते हैं, कुछ एलिमेंट्स, फन एलिमेंट्स। बताओ मैम क्या ऐड करना चाहोगे इसमें, आप कुछ स्माइली वगैरह ऐड करना है? मैम कैन यू हेयर मी? यस मैम, आई एम एबल हाँ टू मैम, हियर यू। बताओ मुझे क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें, कोई स्माइली वगैरह कुछ ऐसा बच्चों के लिए? एनीथिंग यू वांट मैम। पूनम मैम बताओ क्या ऐड करूं इसके अंदर? पूनम मैम का एवर स्माइलिंग फेस लगा देते हैं, चलो। क्या पूनम मैम? Ma'am, it can add. Very nice. Can you change the color of prime number to that? ठीक है मैम, लेट्स चेंज द कलर। अब हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, अपने हिसाब से कलर्स डाल देते हैं। और बताओ पूनम मैम, फेवरेट कलर?
मैम बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा डिजाइन लगा देते हैं। ओके मैम, ये सही लग रहा है? फाइन, क्लियर स्काई। Okay. ठीक है मैम, और बताओ, मुझे कुछ ऐड करना चाहते हो तो? Very nice. Jyotsna ma'am, add the stickers. मैम स्टिकर्स ऐड करूं? ओके Now मैम, it's beautiful. ठीक है मैम, स्टिकर्स ऐड करते हैं। सो हम दोबारा एलिमेंट्स पे जाएंगे। ओके मैम, मैम दीज आर द ऑप्शंस फॉर स्टिकर्स। इमोजीज है यहाँ पे, बहुत कुछ है। एंड डेफिनेटली जब हम इसको अपनी टीचिंग में, क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में यूज करेंगे तो डेफिनेटली किड्स वुड एंजॉय कि क्या मैम ने लगा दिया। सो लेट्स यूज दिस स्माइली। अब इसमें हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, कुछ तो इसके फीचर्स जो है फ्री है और कुछ जो है वो प्रो मेंबर्स के लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन एवर यू आर यूजिंग दीज आइकन्स और स्टिकर्स, यू हैव टू सी कि वो फ्री है कि नहीं है, अदरवाइज दे विल बी, यू विल हैव टू पे फॉर दैट। क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स हैं वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ उनके लिए, वो प्रो मेंबर्स के लिए ही है सिर्फ। तो मैम ये स्माइली देखो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, आप कहीं पे भी स्माइलीज को लगा सकते हो। मैम इज इट फाइन नाउ? Yes, yes. परफेक्ट, राइट मैम। अब आती है इसको सेव करने की बारी। मैम ये हमारी ड्राइव की तरह ही है, जो भी हम इसमें काम करेंगे ना, इट विल ऑटोमेटिकली गेट सेव्ड। बट अगर मुझे इसको कहीं पे इंपोर्ट करना है, मुझे इसको बाहर चेंज करना है, मुझे लेके जाना है, तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। मैम ये सारी ऑप्शंस आप देख सकते हो। मैं प्रिंट फ्लायर्स पे गई हूँ, ये प्रिंटिंग के लिए है, इफ यू वांट टू प्रिंट द फ्लायर। सेकंड इज फॉर डाउनलोडिंग, इफ यू वांट टू डाउनलोड इट। थर्ड वन इज शेयर लिंक, अगर आपको लिंक शेयर करना है आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, अभी मैंने यहाँ पे ये बनाया है, अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना है, जैसे मैं अपनी पीपीटी बनाई है, मुझे उसको प्रेजेंट करना है, तो ये देखिए मैम, आई हैव प्रेजेंटेड माय फ्रेयर्स मॉडल हियर। इज इट क्लियर एवरीवन? सो मैम हम अपनी कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी ओरिजिनलिटी, वट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट, हम फ्लैश कार्ड्स, वोकैबुलरी कार्ड्स अपनी क्लासरूम टीचिंग के लिए, जो ऑनलाइन टीचिंग हमारी चल रही है, विच इज द लाइक नीड ऑफ द आवर नाउ डेज ड्यूरिंग दीज टाइम्स, तो हम यहाँ पे आराम से वी कैन मेक दीज फ्लायर्स, दीज वोकैबुलरी कार्ड्स, दीज फ्लैश कार्ड्स ऑन कैनवा इजिली, और अपनी क्रिएटिविटी को हम एक नया नाम दे देंगे। सो ऑन दिस नोट, एक और मेंटीमीटर पे जरा एक एक्टिविटी हो जाए, देखो मुझे कितना सबको याद है। So my next question is, again I'm repeating my code. The code is 530689. And my question is, which feature in Canva did you like the most? Yes, please start answering. Which feature in Canva did you like the most? I'm repeating my code once again, 530689. Which feature in Canva did you like the most? Elements, okay, nice. Creativity, create, wow. PPT with video, wow. Background colors, making presentation. Thank you so much teachers for your overwhelming responses during these activities. Colorful themes, nice. And overall ही Canva एक अच्छा tool है. So I would recommend all of you to make some creative flashcards, vocabulary cards and other things using Canva. Thank you so much.